Irrelevant. Probably where did we leave last time? Question. Do you remember? Do you remember which question? यार बहुत स्लो क्लास है। आपको याद है किस क्वेश्चन में छोड़ा था? ये वाला है ना? सॉरी। ओ अब बताएं तो। ओके इस प्रॉब्लम का मैं क्या करूँ? मैं इससे कह रहा था ना, आप इसका हार्ड कॉपी okay dear students, so 46 was RBC, right? Done. What's the answer? Loud. Beta है ना? Yes. No. Beta. Chloroplast should be inside side of inside cell membrane. सही है? And this one is root vessel. Yeah. ठीक है बेटा? Alpha. Any problem? Not an organ. It's just tissue. अगर cilia, they destroy, so you cannot move mucus up, है ना? हमने पढ़ा था ना, ciliated cells have cilia, hair-like structure. So they move mucus up towards throat. I mean, towards throat. Whenever we close our mouth, so then it is swallowed in the stomach. So what's the answer? Delta. Yes. Palisade and liver both, cytoplasm and nucleus. Right? This is normal plant cell, this is a palisade cell. Palisade cells are rectangular in shape. अच्छा, ये आपके पास वर्कशीट तो नहीं है। मैं तुम लोग बनाते हो इसको, नोट्स बनाते हैं कॉपी पे? डू यू? मैं कहता हूँ वीडियो देख के घर पे नोट्स इसके शिफ्ट करने, ठीक है? ये कौन सा सेल है बेटा? स्पॉन्जी मेसोफिल। जबरदस्त रामीन, गुड टुडे। स्पॉन्जी मेसोफिल सेल। यार अब ये मिस्टर कामिल, व्हाट्स द नेक्स्ट? RBC, नाइस। मिस फातिमा, ये एपिडर्मिस सेल, लोअर यहाँ पर, मतलब इसको नॉर्मल प्लांट्स आप कह सकते हो ना? एंड दिस वन आर नॉर्मल। व्हाट्स द आंसर? All of these are cell membrane, right? Yeah, what's this one? If anyone needs water, there's ठंडा water here. What is it? No, ये है क्या बेटा? Sperm cell with tail, with what? A से? Acrosome, very good. To cut the dash, J से? Hello, jelly coat. आज हसान और अब्दीन भी नहीं और हसन नवाज भी नहीं। तो ये ए है, अल्फा। जाइलन, आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने घर पे ट्राई किया इसको? ट्राई आप दोनों? कामिल नहीं? फाद, आप जनरल नॉलेज पे चला रहे हैं, गुजारा है ना? लेकिन आप ट्राई करना है इसको बस, ताकि पता है क्या, हम अगला टॉपिक चले जाएंगे
विदाउट डूइंग क्वेश्चन, फिर वो एग्जाम के करीब आपको क्लियर होगा नहीं. इमेजिन इफ वी गो नेक्स्ट टॉपिक विदाउट डूइंग सफिशिएंट क्वेश्चंस ऑफ अ टॉपिक, सिलेबस खत्म करने के लिए करने, तो फिर आपको वो टॉपिक सही तरह आएगा नहीं. आप समझ रहे मेरी बात? So you people have to cooperate. We cannot remain strict to so long a time. ये this is second last session of this chapter, probably last video. मेरा ख्याल है हमने आपको ग्रुप में भेजी थी. हाँ, ये आज लास्ट सेशन है शायद. ये बेटा लीफ है. अच्छा, इसका आंसर क्या होगा जालिम? आवाज नहीं आ रही. बीटा है ना, ये लीफ है. तो लीफ में अपर एपिडेमिस हो गया. एंड व्हाट इज दिस टॉप वन? अच्छा, वो बताई नहीं है. ये कौन सा बेटा? पैलिसैड, राइट. अपर एपिडेमिस के नीचे पैलिसैड म्यूजिबल. नहीं आ रही समझ? नहीं समझ आ रही? नहीं आ रही. अपर एपिडेमिस के नीचे क्या? पैलिसैड म्यूजिबल, ठीक है ना. उसके ये क्या बेटा? लोअर एपिडेमिस. और ये कौन सा होगा? अल्लाह, स्पॉन्जी म्यूजिबल. एंड देन ऊपर होती है जाइलम. लीफ में जाइलम इज अपर साइड, और यहाँ पे कह लो फ्लोएम. एंड दे बोथ मेक मिडरिब. हैव यू एवर सीन द मिडिल thicker portion of leaf? नहीं समझ आ रही? अगर लीफ हो देखो मिडिल में यू थिक सी वो नहीं होती मिडरिब? जी सर. आई मीन समझ है ना? या ये वाली ये मिडरिब है ना. सो यूं काट के आपको सामने से दिखा रहे हैं, यहाँ से. नहीं समझ आ रही? या इसका कट सेक्शन कल भी बना हुआ था यूं. ये लीफ है, लीफ के मिडिल में कभी लीफ हो रही है, मिडिल में मिडरिब नहीं होते थिक सी. जो लीफ है उसके मिडिल में एक थिक सी लाइन नहीं होती. आ रही है माइंड में? नहीं. when you move, when you look, when you touch leaf, so the middle of this is hard, thick line, midrib. Anyway, what is X? Which type of cell are found in X? X पहली सेल ले रहे हैं, तो कौन सा होगा? A, अल्फा है ना. बाकी B, C, D क्या है? They all are spongy mesophil, irregular shape. ये फ्रेंड्स spongy mesophil क्या होते हैं? Irregular shape cells. So what is A? खुदा के लिए बोले यार, क्या नहीं पढ़ना तो छुट्टी करो. A is what? Palisade mesophil. And B, C, D are spongy mesophil. How does cell, liver cell, कामिल बताएंगे मुझे, liver differs from palisade? या ये जो है ना, कुछ आप बताएं कुछ मैं बताता हूँ. कामिल भाई, PQRS, can you name any? Q is RBC, S is xylem. ये अंदर उसके लिखने नहीं. S is what? And what is R? A normal plant cell. माशाल्लाह, ये RBC है. और ये मसल सेल है. They are contractile. इनकी शक्ल बस आप माइंड में रखिए. What's the answer? Can't hear you. Delta. ये repeated है ना? Not correct. Which label is not correct? B should be beta. Yeah, this is cell membrane, this inner one. So B is what? Cell wall. D सही है, ये पूरा cell wall है ये. So the right answer is beta. रूट क्या होते हैं? कल हमने पढ़ा था प्लांट्स के 4 ऑर्गन्स है. वाह वाह. रूट, स्टेम, लीफ एंड फ्लावर इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज फ्लावर. पता ना सीड द्वारा. रूट, स्टेम, लीफ एंड फ्लावर, these are 4 major organs of plants. But not every plant is flowering plant, you know. I repeat, not every plant is. Are you with me? Not every plant is not a flowering plant. बच्चों,
भाई मेरी बात समझ आ रही है? I mean, some plants are flowering plants and some are non-flowering. ये आप लिख भी सकते हैं छोटी छोटी बात. Some are vascular, some are non-vascular. हम क्यों पढ़ रहे हैं ये? क्योंकि हम क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे. क्लासिफिकेशन अब आपके जीसी में भी ऐड हो गया. जीसी ना, आईजीसी, आईजीसी, जीसी, अब तीनों जीसी वाले. So you will not find questions on classification in past papers. There's a recent edition. And our next topic, yes. So organ. Quick answer बताएं. मैं आप explain नहीं कर रहा. आवाज नहीं आ रही. Alpha. Alpha. Okay, Ramin, can you name 1, 2, 3, 4? One is पहली सर माशाल्लाह. 2 फातिमा. C. 3 हमने नहीं पढ़ा. 3 की शक्ल याद रखें. घर पे जब आप वर्कशीट डाउनलोड करें, प्रिंट निकालें, तो उसमें आप लिखें फैगोसाइट. व्हाट इज दैट? व्हाइट ब्लड सेल. और ये आरबीसी. So which one contains cellulose and vacuum? Obviously 1 and 2. No. No, man. Okay. Alpha. You know, when there is a cell, plant cell, so cytoplasm के बाहर क्या होता है बेटा? Outside cytoplasm is what? Cell membrane. A. Cell membrane is not surrounded by cytoplasm. Surrounded by cytoplasm means that cytoplasm is outside cell membrane. Cytoplasm is inside cell membrane or outside cell membrane? Cytoplasm is inside cell membrane. Inside. It is not. So cell membrane is not surrounded by cytoplasm. Cytoplasm is surrounded by cell membrane. माशाल्लाह. यार खुदा किसी को मसला है इस क्वेश्चन में? Are you all convinced? A. बेटा A. बीटा. अच्छा, ये हमने पहले नहीं पढ़ा. ये रूट है. तो देखो रूट्स में सबसे बाहर ये रूट हेयर सेल्स हैं. व्हाट? रूट हेयर सेल. और ये पूरा क्या? रूट. और ये बेटा कॉर्टेक्स. और ये अंदर स्टार लाइक जाइलम. एंड दिस गाय इज फ्लोएम. ये आप लोग जब घर पे इस वीडियो को स्लो रन करना, ठीक है, तो या कॉपी पे पॉज करके ना कॉपी पे बना लें. ठीक है, या बेस्ट दैट यू शुड हैव दीज रिसोर्सेज विद यू. व्हाट्स द आंसर? बेटा रूट इज ऑर्गन, सेल या टिश्यू? अभी हमने एक दफा पढ़ लिया ना, प्लांट्स के 4 मेजर ऑर्गन्स हैं. रूट, स्टेम, लीफ एंड टिश्यू, फ्लावर. क्या होगा बेटा? रूट इज आर मस्ट बी ऑर्गन. तो बी या सी? P is cell, Q is tissue, cortex tissue. Fatima. Red blood cells, do they have nucleus? And what about root hair cell? And what about xylem? माशाल्लाह. xylem में कुछ भी नहीं होता. चार्ली. ये देखो एनिमल सेल. Yes. Any problem? 2 cell membranes. सही है ना? There are 2 cells and contact. बच्चों आगे चलो. Which cell is it? Kamil. Oh, लिखा हो स्पॉन्ज में से.
डन, पी एंड आर है ना। ये भी यू नो व्हाट इज दिस क्यू, और ये पूरा क्या है, कैपिलरी अल्फा।